In a major development boost for Tripura, the centre laid the foundation stone for the highway projects to improve the road connectivity in the northeast states. The 9 highway project was launched by Union Minister for Road and Transport and Highways Nitin Gadkari virtually from Delhi. A report. To enhance the road connectivity in Tripura, Centre has recently launched National Highways projects worth Rs 2,752 crores. Laying the foundation stone via video conferencing from New Delhi, Union Minister Nitin Gadkari said the projects would help build 262 km more of national highways, while nearly 300 km have been added in Tripura in the last 6 years. The projects will generate self-employment opportunities for the unskilled, semi-skilled and skilled manpower in the region. Implementation of the project would result in enhanced socio-economic conditions of the locality. आज 2,752 करोड़ रुपए की लागत से करीब 262 किलोमीटर की नौ परियोजना के काम उसका शुभारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा कि ये पूरा काम 1.5 साल में करने का लक्ष्य हमने सामने रखा है और 1.5 साल में ये काम पूरा करने से त्रिपुरा की तस्वीर बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। The highway will be constructed from Agartala to Churaibari along the border with Assam in North Tripura. The connectivity of Agartala city to Assam border through National Highway 108B, National Highway 208 and National Highway 208A will provide shorter length connectivity. The upgradation work for Agartala to Khowai National Highway 108B and Kailashahar to Assam border National Highway 208A has already been awarded, and upgradation of the balance section of Kailashahar to Khowai National Highway 208 has been proposed under Japan International Cooperation Agency JICA funding. एक्ट ईस्ट पॉलिसी में त्रिपुरा का एक विशेष महत्व है और मैं उसमें ये बात भी जोड़ दूं कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे यानी फाटक या प्रवेश द्वार है तो वो त्रिपुरा है और इसमें डोनर का भी थोड़ा बहुत इसलिए भूमिका रहेगी कि अगले 1-1.5 वर्ष के भीतर बांग्लादेश को जाने वाली सर्वप्रथम रेलगाड़ी अगरतला से रवाना होगी और सीमा के इस पार की पटड़ी का निर्माण का कार्य डोनर मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। The projects on completion will be a boon for the people and provide all-weather connectivity in the hilly and rainy terrain of the region and will be a stride towards strengthening the tourism sector of the state.